हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे एट वेरी रीजनेबल प्राइस। यहाँ पे बात करते हैं, हम सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में चौथा क्वेश्चन से कवर करेंगे, व्हाट डू मीन बाय ग्रीवेंसेस और व्हाट डू मीन बाय एम्प्लॉइज ग्रीवेंसेस, व्हाट आर द वेरियस कॉजेस ऑफ ग्रीवेंसेस, एक्सप्लेन ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन इंडियन हिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसीजियर ऑफ ग्रीवेंसेस रिड्रेसल इन इंडियन हिस्ट्री। तो सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय इंडस्ट्रियल ग्रीवेंसेस की बात करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, ग्रीवेंसेस मीन्स एनी रियल और इमेजिनरी फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड इनजस्टिस व्हिच एन एम्प्लॉई हैज अबाउट इट्स एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। इन वर्ड्स ऑफ माइकल जे जूसियस, a grievances is any discontent or dissatisfaction where expressed or not, whether valid or not, arising out of anything connected with the company that an employee thinks, believes or even feels it's unfair, injustice or inequitable। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस में अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1 देखिए, ग्रीवेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ वर्किंग कंडीशंस, पुअर फिजिकल कंडीशंस ऑफ वर्कप्लेस। नंबर 2 वेरी टाइट प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। नंबर 3 नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर टूल्स एंड मैकेनिज्म्स, अनप्लान्ड चेंजेस इन शेड्यूल्स एंड प्रोसीजर्स, फेलियर टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन, मिसमैच ऑफ द वर्कर विद द जॉब, पुअर रिलेशनशिप विद द सुपीरियर। उसके बाद देखिए नंबर 2 ग्रीवेंसेस अराइजिंग फ्रॉम मैनेजमेंट पॉलिसी, वेजेस रेट्स एंड मेथड ऑफ वेज पेमेंट, ओवर टाइम एंड इंसेंटिव स्कीम, सीनियरिटी, ट्रांसफर्स, प्रमोशन, डिमोशन एंड डिस्चार्ज। नंबर 6 लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर ग्रोथ, पेनल्टीज इम्पोज्ड फॉर मिसकंडक्ट, leave, hostility towards trade union. Number 3 grievances arising from elite violation. Number 1 the collective bargaining agreement, company rules and regulations, past practice, central or state laws, represented responsibilities of management। उसके बाद देखिए ग्रीवेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ पर्सनल माल एडजस्टमेंट, ओवर एम्बिशन, उसके बाद एक्सेस सेल्फ एस्टीम एंड इम्प्रैक्टिकल एटीट्यूड ऑफ टू लाइफ। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडस्ट्री एडिक्वेट अटेंशन हैज नॉट बीन पेड टू द सेटलमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ओनली इनडायरेक्टली डील्स विद द रिड्रेसल ऑफ इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। इट प्रोवाइड्स दैट एवरी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 100 or more employees should frame standing orders which should contain, among other matters, provisions for means of redressing the workers against unfair treatment or wrongful exceptions by the employer or his agents or servants. Number 2 the Factories Act 1948. It provides for the appointment of welfare officers in every factory wherein 500 or more workers are ordinarily employed. These officers are generally entrusted with the task of dealing with grievances and complaints. However, these provisions are not helpful due to the dual role which these officers are called upon to play. Number 3 the Industrial Disputes Act 1947. This law provides, number 1 the employer in relation to every industrial establishment in which 50 or more workers are employed shall provide for a grievances settlement authority for the settlement of industrial disputes connected with an industrial workman employed in the establishment. The provisions of this authority shall be in accordance with rules made in that behalf. उसके बाद देखिए, where an industrial dispute connected with an industrial workman arises in his establishment referred to above, a workman or any trade union of workmen of which such workman is a member may refer to such disputes to the grievance settlement authority for settlement. The grievance settlement authority shall follow such procedure and complete its proceedings within such period as may be prescribed. लास्ट पॉइंट देखिए नंबर 4 नो रेफरेंस शेल बी मेड टू बोर्ड्स, कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स फॉर एनी डिस्प्यूट रिफर टू इट्स इन सेक्शन अनलेस such disputes have been referred to the grievances settlement authority concerned and the decisions of the authority is not acceptable to any of the parties to the dispute। तो आज के लिए बस इतने ही। और इसी के साथ जो है हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड फाइनली यूनिट 5 सारे के सारे यूनिट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे नोट्स मैंने आपके साथ, क्वालिटी कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया एट वेरी रीजनेबल प्राइस। और उसके साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ भी आपके साथ इजीली एक्सेसिबल है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को, तो बेहतर वीडियो आपको मिलते अगले वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसके रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।